Hello everyone, I hope all are doing well. So in this video, in this session, we will discuss a very interesting chapter that is getting to know plants. Why do we need plants? Yeah, so plants, बच्चों देखो आसपास बहुत सारे प्लांट्स आपको नज़र में आएगा. आपके गार्डन में चले जाओ तो प्लांट्स में बच्चों क्यों हमें ज़रूरत है प्लांट्स की? क्योंकि प्लांट से हमें एयर द ऑक्सीजन और द एयर वी ब्रीथ, वो भी कहाँ से हमें ऑक्सीजन मिल रही है? एयर में ऑक्सीजन भी हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है. जो खाना हम लोग खाते हैं, द फूड वी कंज्यूम, वी दैट ऑल्सो वी गेट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम प्लांट्स. एंड जो मेडिसिन, ओके, एंड द फर्नीचर्स वी हैव, द वुड, फर्नीचर में जो वुड है वो भी कहाँ से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है. तो सब कुछ ही हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है. सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स. एंड ये बहुत ज़रूरत है कि हम याद रखें कि प्लांट्स के अलावा हमारा सर्वाइवल इम्पॉसिबल है इस दुनिया में. ठीक है. तो इसीलिए सेव प्लांट्स, ओके, ग्रो, डू प्लांटेशन whenever possible, okay, whenever you feel like to do, you grow many plants. Okay, so first in this chapter, first आपको क्या जाना है? फ्लावरिंग प्लांट्स. प्लांट्स which bear flowers are called flowering plants. Their bodies are divided into root, stem, leaves and bear flowers and fruits. Okay, जितने भी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर आते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. एंड उनका बॉडी, प्लांट का बॉडी, दे आर डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स एंड बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ओके, then herbs, shrubs and trees. Plants are usually grouped into herbs, shrubs and trees on the basis of their height, stem and branches. So what do you mean by herbs? Plant with green and tender stem are called herbs. They are usually short and sometimes do not have branches. Okay, and shrub, some plants have branches arising from the base of the stem and the stem is hard but not very thick. They are called shrub. Trees, some plants are very tall and have a hard and thick stem. They have branches arising from upper part of the stem and they are called trees. Okay, and then creepers एंड क्लाइंबर्स. क्रीपर्स क्या है, क्लाइंबर्स क्या है? तो बेसिकली तीन तरह का प्लांट्स हम लोग देख लिए, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज. एंड क्रीपर क्या होता है? द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर वेरी थिन एंड वीक एंड दे आइदर लाई ऑन द ग्राउंड और नीड सपोर्ट टू स्टैंड अप. कुछ प्लांट्स जो है उनका स्टेम बहुत ज़्यादा पतला एंड वीक होता है, तो उनको ग्राउंड का ज़रूरत है या कुछ सपोर्ट सिस्टम का ज़रूरत है. तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रीपर बोलेंगे और क्लाइंबर बोलेंगे. ये सारा आपके बुक में गिवन है एंड आई एम टेलिंग यू एज अ नोट फॉर्मेट. ओके, सो स्टेम के बाद क्या है? इट बियर्स. स्टेम के पास होता क्या है? लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स रहता है स्टेम के पास. एंड स्टेम का मेन फंक्शन होता है, ये वाटर कंडक्ट करता है फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड टू द अदर पार्ट्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पोटैटो, याम्स, जिंजर, ऑनियन, दो प्रेजेंट इन द सॉइल और एक्चुअली स्टेम एंड स्टोर फूड विद इन देम. ओके, लीफ क्या है? लीव्स बहुत वैरायटी शेप का मिलता है, साइजेस का मिलता है, अदर स्ट्रक्चर का. एंड वेनेशन क्या है? द पैटर्न ऑफ वेन्स एंड वेनलेस ऑन द लीव्स इज कॉल्ड वेनेशन. जितना भी पैटर्न देखते हो ना, वेन्स एंड वेनलेस ऑन द लीव्स, इट इज कॉल्ड वेनेशन. सो वेन्स आर दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द लीव्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क. ओके, एंड जो पैटर्न है वेन्स का एंड वेनलेट्स का ऑन द लीव, दैट इज वेनेशन. मिडरिप क्या होता है? इट इज़ अ थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ. जो थिक वाला वेन देखते हो मिडल ऑफ द लीफ में, दैट इज मिडरिप. टाइप्स ऑफ वेनेशन, टू टाइप्स ऑफ वेनेशन, दो तरह का वेनेशन है. फर्स्ट है रेटिकुलेट वेनेशन. इफ द वेनेशन इज नेट लाइक अपीयरेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडरिप, इट इज कॉल्ड रेटिकुलेट. फॉर एग्जाम्पल पीपल. एंड पैरेलल वेनेशन. सो फर्स्ट रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होगा? नेट लाइक अपीयरेंस रहेगा इन द बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिप, तब हम उसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल पीपल. एंड पैरेलल वेनेशन में क्या हो जाएगा? जैसे ग्रासेस में होती है, वेन्स में होती है एंड वेनलेट्स में होती है, they are parallel to one another. Such a venation is called parallel. Okay, in the leaves of grasses the veins and venlets are parallel to one another. Such a venation is called parallel. And then node. What do you mean by node? Places where leaves and branches are joined to stem are called nodes. Internodes, the part of stem between two nodes is called internode. Right, ऑल थिंग्स आर गिवन. तो लीव्स का मेन फंक्शन होता है, दो फंक्शन है. फर्स्ट है ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लीव्स. ओके, एंड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस तो बताइए, जो ग्रीन लीव्स जो फूड सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. राइट,
And then roots क्या है? Roots are mostly the underground part of the plant and they absorb water and mineral from the soil and they hold the soil firmly to keep the plant upright. Some roots store food and become plump. रूट्स क्या मदद करता है? वाटर एंड मिनरल को अब्जॉर्ब करता है सॉइल से एंड हेल्प करता है प्लांट को अपराइट रहने में. ठीक है. रूट्स दो तरह की होती है, तो कुछ मॉडिफाइड रूट्स का एग्जांपल हो जाएगा कैरेट एंड स्वीट पोटैटो. एंड दो तरह की रूट्स है, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट. राइट. फाइब्रस रूट क्या है? द प्लांट्स लाइक ग्रास, द ब्रांचेस ऑफ द रूट कम आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. सच रूट्स आर नोन एज फाइब्रस रूट्स. एंड टैप रूट्स क्या है? कुछ द ब्रांचेस ऑफ द root arise from a thick structure under the ground which is called the main or primary roots. Such roots are called tap roots. Okay. रूट लैटरल रूट्स भी है, छोटे छोटे रूट्स को लैटरल रूट्स बोलेंगे. एंड जिन जिन प्लांट्स के पास लीव्स विथ रेटिकुलर वेनेशन है उनके पास टैप रूट होती है. एंड प्लांट्स हैविंग लीव्स विथ पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट. फ्लावर क्या है? It is usually the most attractive part of a plant, also called as modified shoot. And sepals, petals, stamens, and pistils are the main parts of the flower. Parts of a flower are usually present in rings or whorls. Pedicel, what do you mean by pedicel? The stalk that joins the flower to the plant is called the pedicel. And sepals, it is the outermost whorl of the flower. Often they are small green leaf-like structures and they protect the inner parts of a flower while it is still a bud. Okay. Petals. Inside these sepals there is the whole whorl of petals. Different flowers have petals of different colors. Okay. Stamens, these are 4 to 6 in number and are male reproductive part of a flower. Each stamen is made of 2 parts, filament and anther. Anther contains pollen grains. Pistil, it is the innermost part of a flower. Ovary can be divided into 3 parts: stigma, style and ovary. Ovary may further be divided into locules and locules contain ovules. Okay. So this is all about the chapter. Okay. Ovules are the small bead-like structures inside the ovary. Okay, these are ovules. So I hope guys you have understood the chapter. You have clear है अभी chapter. So guys, if you enjoy all these sessions, then guys do like, share, subscribe with your friends. Okay. And subscribe Study with Nanika and stay tuned.